Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, dear devotees, please join us for Jai Radha Madhav prayers. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajanaranjana Yashodanandana Brajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana Brajanaranjana, Yashodanandana Brajanaranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira
please join us for Guru Pranati. Actually, please welcome. हरि बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें, प्रभु जी नॉर्मली श्रीमद् भागवतम क्लासेस करते हैं वीकडेज में, लेकिन आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जो कि भगवत गीता चैप्टर 18 से प्रभु जी जिस पर हमें एनलाइटन करेंगे। बहुत ही प्यारी और इंसाइटफुल वर्स है। सो जो भी व्यूअर्स अपना वक्त देकर इस श्रवणम कीर्तनम सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं उन पे आज भगवान की स्पेशल कृपा है। अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, चित्रा गिडवानी जी, निधि गुप्ता जी, बैसाखी जी, शिव शंकर जी, विजय जी, सिद्धार्थ जी, सुधी, स्मिता, लोकेश, मनीष कुमार, दीवान, अर्पण, अर्जुन सिंह, हर्ष और बहुत सारे व्यूअर्स जिनका नाम हम अभी ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन काइंडली आपने हमें ज्वाइन किया है। सो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सो प्रभु जी प्लीज गो अहेड विद द क्लास। Hare Krishna. Please join us for Guru Pranati. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees. प्रभु जी, आई एम पुटिंग ऑन द माइक्रोफोन। Thank you. हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है। पहले तो अक्षय तिथि की जाए। सो अगेन टुडे इज अक्षय तिथि एंड ऑल्सो रिफर टू एज अक्षय तृतीया, जो कि तीसरा दिन। तृतीया, थ्री मीन्स थ्री, त्रिया। So again, Tritiya refers to the date that happens on the third day of what? Waxing moon. You know, this is like Shukla Paksh. शुक्ल पक्ष में, और वो भी कौन सा मंथ है? वैसाख। सो वैसाख के माह में जो शुक्ल पक्ष है, जिसमें द सन, उसका जो है ना लाइटेड पोर्शन, इट्स इंक्रीजिंग, राइट? ऑल्सो नॉट द सन, द मून। द मून्स लाइटेड पोर्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। एंड तो ऐसे में जो थर्ड डे होता है उसको वैक्सिंग मून का इन द मंथ ऑफ वैशाख इज रिफर्स टू एज अक्षय तृतीया। एंड दिस अक्षय तिथि इज वेरी ऑस्पिशियस। व्हाई इज इट वेरी ऑस्पिशियस? बिकॉज नॉर्मली ऑन अदर डेज वी लुक फॉर मुहूर्त, राइट? This is a good time, this is Rahu Kal, don't do these activities in Rahu Kal, don't do these activities when Mangal is very strong, you know, all those different planets का जो influence है, different you know, constellations का जो influence है उसके हिसाब से देखते हैं. But Akshaya Tithi is one day where everything is auspicious, all time is auspicious, all places are auspicious, and all activities, they become successful, and the most important activity that we should perform is devotional service, right? We all want to be successful in devotional service so that we attain the goal of life, because that's the very basis that we have received this human body, right? हमें जो ये मानव मनुष्य का शरीर मिला है उसका इम्पोर्टेंस ही यही है कि हम इस भव सागर के पार जा सकते हैं, राइट? उसका पर्पस है, जैसे नाव का पर्पस होता है ना, टू क्रॉस द रिवर और टू क्रॉस द ओशन, टू क्रॉस अ वाटर बॉडी, यू नो, गो फ्रॉम एक तट से दूसरे तट पे जाने के लिए। इसी तरह हमें जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ना, इट इज़ लाइक दैट बोट दैट कैन टेक अस अक्रॉस दिस मृत्यु संसार सागरात। एंड ऑफ कोर्स वाइल वी मेक एंडिवर, हम अपना चप्पू चला रहे हैं थ्रू द चैंटिंग, बट वी आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण के भगवान, प्लीज यू नो टेक अस आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड so that we can continuously engage in your devotional service, ताकि हम उनकी भक्ति में लगे रहें। अब ऐसे पैंडेमिक टाइम में स्पेशली सब लोग घर में इतने ज़्यादा बंद रहे हैं कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, राइट? बट देन बाहर देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप। पदम पदम यत विपदाम नतेशम, दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड।
तो ऐसे में कहाँ जाएं जहाँ हमें संपूर्ण यानी अनलिमिटेड आनंद मिले, ब्लिसफुल। एंड वो भी नहीं कि द स्पार्क इन द डार्क, नो, वी वांट कंप्लीट फुल सनशाइन, ऐसी हैप्पीनेस। एंड दैट इटर्नल हैप्पीनेस वी कैन ओनली गेट through devotional service by pleasing Lord Shri Krishna, because Lord Krishna is Surya Sama and Maya hai Andhakara, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया राधिकारा। सो हम भगवान कृष्ण की जब शरण लेते हैं, वी आर इन कंप्लीट सनलाइट, और हम उसमें क्या जो हमारे आसपास है क्या कुछ उससे अच्छी तरह से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दैट दीज आर द ग्लोरीज। सो इसी के रेफरेंस में लॉर्ड कृष्णा जब अर्जुन को भगवत गीता में उपदेश दे रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि ब्रह्म भूता स्टेज पे कौन पर्सन है, राइट? वन हु इज कॉन्स्टेंटली रिजॉइसिंग। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म भूता स्टेज पे कोई है तो ही इज प्रसन्नात्मा, ही इज रिजॉइसिंग। सो वी ऑल वांट टू रिजॉइस, राइट? तो ऐसे पर्सन की क्या क्वालिटीज है? ना शोचती ना कांक्षती। ऐसा जो पर्सन होता है वो ना तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, लेमेंटेशन नहीं है उसको, एंग्जाइटी नहीं है अबाउट द पास्ट, एंड ही इज नॉट आकांक्षती, यानी वो आगे भविष्य में की आकांक्षाएं नहीं रख रहा है कि अरे मेरे को पहले लॉटरी नहीं निकली, अरे मुझे आगे लॉटरी मिलनी चाहिए। इस तरह से कॉन्स्टेंट lottery you can fix whatever those desires are that people are making. तो ऐसे में the person is constantly in anxiety, but Prasanna Atma is at the present moment engaged in devotion service, right? तो ऐसे में न शोचति न कांक्षति सभा सर्वेषु भूतेषु, and he is equally disposed, right? सुहृदय सर्वभूतानाम, so he is सब लोगों को again रिलेट करते हुए, लाइक सब लोगों को समझते हुए कि ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सो ऐसे में ही द पर्सन इज रिलेटिंग एंड सो मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट पाथ एंड बीइंग वेरी फ्रेंडली and well-wisher of all living entities, mad bhakti labhate param, and constantly engage in devotional service. So if we want to become prasannatma, if we want to be in a true state, brahma bhuta stage, we all brahmasmi. So again, we all understand that yes, we are Brahman, we are not this material body, we are jivas, and jivera swarup hoya Krishna nityadas. So we are eternal servant of Krishna. तो हमें क्या करना चाहिए एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा? भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस। और भक्त, हाउ इज दिस भक्त इज सो डिफरेंट देन कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। सो भगवान कृष्ण बताते हैं दैट देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ योगी हु कैन अंडरस्टैंड हिम, राइट? एंड दिस occurs in the 55th verse of chapter 18 of Bhagavad Gita. तो जो चैप्टर 18 है, अध्याय 18, उसका जो 55वां जो श्लोक है 55, that's where he is revealing भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तद अनंतरम. So Lord Krishna is revealing that one can understand me as I am. तत्वतः, तत्वतः means in truth. तो कोई अगर भगवान को जानना चाहता है तो वो कैसे जानना चाहता है? भगवान खुद बता रहे हैं कि वो जो हैं, वो जैसे हैं, उनका जो सत्य है, उनके जो ट्रुथ है, इन ट्रुथ वन कैन अंडरस्टैंड हिम. और कैसे समझ सकता है? एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. दैट लॉर्ड श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. केवल भक्ति मार्ग को लेके, भक्त बन के, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है. यावन या चाश्मी तत्वतः, जब वो पूरी तरह से एंगेज होगा किसमें? कॉन्शियसनेस ऑफ मी इन डिवोशनल सर्विस. तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा, राइट? सो जब वो डिवोशनल सर्विस में एंगेज होगा तब वो मुझे फुल कॉन्शियसनेस, ही कैन कम. वे कैन ही कम? वे कैन ही एंटर? Vishte tad anantaram. So he can enter into the kingdom of God. So we all want to go.
right? Somewhere outside, especially in this pandemic time. So why not go to the kingdom of God while right being here? And for this wonderful time when we want to take such a journey, what is better than anything else than Akshaya Tithi? Because Akshaya Tithi, there is no restriction on time. And then again, with devotional service also there is no restriction of time. But there is another importance of Akshaya. Akshaya also means inexhaustible. So sometimes, when we do something, it is limited in capacity. But Akshaya refers to that which is unlimited, inexhaustible in quantity. तो ऐसे में हम लोग अक्षय तिथि के हिसाब से समझते हुए आज के दिन डिवोशनल सर्विस में एंगेज होंगे. एंड आई विल कवर द पर्पस सो दैट हम लोग समझें कि शीला प्रभुपाद आचार्य हमको क्या रेफरेंस देते हैं. हरे कृष्णा देवी, हम लोगों ने शेयर किया है लिंक टू द वर्स. यस प्रभु जी, आप अनाउंस कर दें कि Yes. पर्पट शेयर कर कि लिंक शेयर कर दी गई है. Hare Krishna. So the link has been shared for Srimad Bhagavad Gita, 18th chapter, verse 55. So we will be covering this purport. It is a beautiful purport. The Supreme Personality of Godhead Krishna and his plenary portions cannot be understood by mental speculation nor by the non-devotees. तो ऐसे में बता रहे हैं कि जो भगवान को समझना चाहते हैं वो mental speculation, Gyan yogis, they are doing philosophical speculation, and then karmis do a lot of mental speculation. तो ऐसे different types of yogis हैं, वो नहीं समझ सकते हैं. और non-devotees who are not devoted to Lord Shri Krishna in a friendly mood, अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम, right? वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं. If one wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. So, अगर कोई जानना चाहता है तो the person should be performing pure devotional service. Pure devotional service referring to that without having any अपने लिए कोई desire नहीं है, fruitive results के तरफ attachment नहीं है, but only एक desire है which is to please Lord Shri Krishna, right? Or under the guidance of a pure devotee. So again, it is also very important कि under the instruction, guidance, under following the instructions of spiritual master. That is very important, बहुत जरूरी है. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden. Otherwise, अपनी तरफ से endeavor लगाने में it will not be possible. As already stated in Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya, he is not revealed to everyone. No one can understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand what Krishna is. University degrees are not helpful. So here, शिला प्रभुपाद रिवील कर रहे हैं, आचार्य रिवील कर रहे हैं कि भगवान को जब हम समझना चाहते हैं, भगवान को जब हम अटेन करना चाहते हैं, जब हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी डिग्रीज हैं वो काम नहीं आएंगी. डिवोशनल सर्विस में लगना पड़ेगा अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. और ये जो विधि है वो 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने खुद रिवील करी है. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. Tadvidhi, please try to understand the process. The process is that we have to accept the shelter of a bona fide spiritual master. A spiritual master जो guru हैं वो one of the 4 संप्रदायस में bona fide संप्रदायस में हैं. रुद्र संप्रदाय जो आ रही है लॉर्ड शिव से, राइट, शिव शंभू जी से रुद्र संप्रदाय है. एंड देन कुमार संप्रदाय फ्रॉम द चतुर कुमार, सनक, सनातन, सनंदा एंड सनत कुमार. और शिव संप्रदाय है गॉडेस लक्ष्मी से, तो वो भी एक संप्रदाय. और ब्रह्म संप्रदाय है फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा से. वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन द परंपरा. So he's not born in the parampara, he has taken to parampara by also taking shelter of another spiritual master in the parampara. So it is a disciplic succession. Now it is very interesting
नॉर्मली जो हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो दैट प्रोसेस जो होता है, हम लोग जो स्टडी करते हैं वो असेंडिंग प्रोसेस है, राइट? हम लोग इस पर्सन ने ये बोला तो उसके ऊपर दिस थ्योरी इज देयर, दिस थ्योरी इज देयर, सो वी आर बिल्डिंग इट दिस वे. बट in spiritual life, the knowledge is descending knowledge, right? So descending knowledge is coming from Lord Shri Krishna through the various paramparas. Evam parampara praptam idam rajashya vidu. Lord Krishna कहते हैं अर्जुन से कि जो various kings थे, starting from Vivaswan, then Vaivasvata Manu, then Ikshvaku and so forth, तो ये जो थे सारे किंग परंपरा में आते हुए उनको ये नॉलेज मिली, right? So these were saintly kings, Kshatriyas are being referred. Arjun is also Kshatriya, but he is also Grahastha. So there is an ashram and there is Varna. So here, इसमें clearly बता रहे हैं कि we want to understand Krishna, then we have to take to bhakti. And Acharya has also revealed कि जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी हैं, भगवान को अप्रोच करने के लिए उनको फाइनली भक्ति योग में आना पड़ता है. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा. After many births, the learned finally take my shelter and they understand that जो वासुदेव हैं वो सर्व हैं. Once again, सर्वव्यापी, सर्व, again, omniscient, omnipotent, as well as he is the supreme personality of Godhead. तो इस तरह से जब समझते हैं कि भगवान ही हमारा ट्रू आश्रय हैं, हमें उनकी शरण लेनी है, तो हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, इवन ज्ञानी इस भगवान की भक्ति में लगते हैं, तभी वो परफेक्ट हो सकते हैं. दे कैन अटेन परफेक्शन ओनली देन. सो नाउ लेट्स सी श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं अपने पोपट में. वन हु इज फुल्ली कन्वर्सेंट विद कृष्णा, विद द कृष्णा साइंस, becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. Liberation involves getting free from the concept of material life. In spiritual life, the same distinction is there, the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. So, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और आचार्य हमको बता रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, right, तो we transcend the three modes of material nature. We are actually existing on the transcendental platform, Brahma Bhuta stage. Even though we are in this material world, but we are situated in the Brahma Bhuta stage. हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि जानते हैं, आचार्य ने रिवील किया, we are not of this world, we are in this world. तो हम, we are spiritual beings having material experience, but why have material experience when we can have spiritual experience? So let's be spiritual being having a spiritual experience by engaging in devotional service. So what is the way you can have a spiritual experience? There is only one way. The true spiritual experience, tattvataha, in truth, is through by engaging in devotional service in Krishna consciousness. So constantly meditating of, Lord's name, form, activities, pastimes. And this process simply starts with the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Or Srila Prabhupada, in second paragraph of this purport, he is defeating the Mayavad philosophy. That I am Brahman, so मैं Brahman में mix हो गया. So this is not like we are water in the river and like rivers जो समुद्र में merge हो रही हैं. We don't merge. We are individual living entities, right? So we are swimming through the river, right? And then when it merges in the ocean, we still remain those aquatics. So इसी तरह से we living entities are staying as it is. Yes. However, when we go to the spiritual world, we get spiritual bodies. In the material world, we get material bodies made of the gross elements, earth, water, fire, air, ether. And then there is subtle body which is made of three elements: mind, intelligence, and false ego. So earth, water, fire, air, ether. So again, these fingers also represent those gross elements. And
mind, intelligence, and false ego. So the false ego is that conditioning I am this body. But when we understand, no, I am not this body, I am a spiritual being. So what is my service? मेरे को क्या करना चाहिए? I should engage in devotional service. That should be our mood. That yes, we want to engage all our activities in pleasing Lord Shri Krishna. So how can we understand this? Srila Prabhupada ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि we have to understand Tattvataha by continuing our devotional service, and we don't become just because we are Brahman, we're already Brahman, right? But we are in material consciousness. We get a spiritual consciousness, Krishna consciousness when we engage in devotional service and serve Lord how? Priti Purvakam, with love, with devotion. We engage in serving Lord Shri Krishna. And in this manner, जब हम भगवान को हम प्लीज करने के लिए सेवा में लगते हैं, तो these three elements are still there. Sevaya, Lord Shri Krishna, this is the Supreme Personality of Godhead. Sevak, we, the living entities, and Seva, the service. All three aspects are all present. Now it is very important that the Sevak should not just become proud, because it is a great privilege to get devotional service. And we should be very careful that we should perform pure devotional service. So, we need to see how we can qualify to enter the kingdom of God. हम अपने आप को कैसे सक्षम बना सकते हैं? How can we become qualified? हम किस तरह से qualification ले सकते हैं ताकि हम भगवान के लोक में भगवान की शरण ले सकें? तो हम उसके लिए जब समझते हैं तो प्योर डिवोशनल सर्विस का रेफरेंस दिया है, राइट? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा. So what is the best devotional service? When we don't have any desire for ourselves, but all desires to please Lord Shri Krishna. But it is not called anyabhilasha shunyam. It's called anyabhilashita shunyam. Because when we take surrender, right, when we surrender to the lotus feet of Lord Shri Krishna, when we engage in His service, if there is danger that comes in our life, अगर हमारे ऊपर कोई विपदा है, some kind of danger आता है, some anxious situation आती है, at that time we take shelter of His lotus feet more. Especially in this pandemic time, so many things are happening. Sare means again India, Eastern world, Europe, America, everywhere this pandemic is causing havoc. तो ऐसे में we take shelter of Lord Shri Krishna. और हम जब भगवान का, that's why it's called anyabhilashita. So it is not that because we feel afraid and we immediately surrender ourselves like Prahlad Maharaj. He was constantly meditating on the Lord. Whatever is happening, he's saying, Lord, it is all your material energy that is causing all this. I simply surrender to you. We have to get to that consciousness. That is Krishna consciousness. Constantly surrendering, constantly taking shelter Bhagwan Krishna ka. और ऐसे में ज्ञान कर्मादि अनावृत, not being covered by the knowledge or the monastic and the fruitive activities, right? Monastic knowledge or fruitive activities. अनुकूलेन Krishna, और जो हमारी activities होती हैं, it should be as Lord Krishna desires, not whimsically, but when we understand how Lord Krishna desires, then we refer to the three evidences: sadhu, guru, and shastra, right? So we follow the instructions of sadhus who are devotees. We follow the instruction of a guru who is a bona fide representative of the Lord, the spiritual master, and shastra, this literature, bona fide scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. So we follow them, and that way we can anushilanam, we can follow the footsteps of previous acharyas, right? Following the 9 process of devotional service. So footsteps of previous acharya, when we follow someone, there are 2 ways to follow: anukaran and anusharan. Anukaran is doing the same thing as the other person is doing. That is imitation. That's that may not be the right way, because you are just imitating, making the same action. But anusharan is taking shelter of those instructions, taking those instructions, understanding the essence behind those instructions, और उसके बाद में जब उन instructions को follow करते हैं, we follow it in a humble mood, in a tolerant mood. So that is very important. So this pure devotional service can allow us entrance into the kingdom of God. So liberation
is, it can free us from the concept of this material life, which is dukhalyam shashvatam, and we can be eternally happy, right? So now Can you announce which paragraph are we on? we are in the second paragraph, almost in the middle section of the second paragraph Of chapter. of chapter 18 verse 55 Okay. और भगवद गीता के, and उसमें so but the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. We are constantly meditating 24/7 on Lord Shri Krishna. So one should not mistakenly think that the word Vishate enters into me supports the monistic theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. No, Vishate means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service unto him. For instance, a green bird enters a green tree, not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Right? So again, this is where Srila Prabhupada is giving very nice example. And green bird, we can think of parrot. Parrot is green. So when parrot goes and sits in a tree which has all green leaves, it doesn't become one with the tree. Rather, it is enjoying the various fruits and the branches and the facilities it gets in the tree. So similarly, we enter the kingdom of God. अब इसी के रेफरेंस में बहुत से लोग शिशुपाल का रेफरेंस देते हैं कि शिशुपाल को जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था, एंड at that time the soul, right, this is Jay, his second birth, third birth actually, the soul came out, and by the mercy of the Lord, everybody in the assembly could see that spark, the spiritual spark, the living entity, so effulgent, coming out from the body of Shishupal and going and merging into Lord Krishna. But they only know this particular part, but actually further, by merging into Lord Shri Krishna, he, Shishupal, who's none other than the gatekeeper Jay, was able to go back at Salokya and become again as the gatekeeper, Samipya, right? And he had the same bodily form as Lord Shri Krishna, the four-arm form of Lord Vishnu. So again, Sarupya, and with the same level of, what do you say, the fortune, right? Because Lord is always eager to share what is his. So in the spiritual kingdom, with all that wonderful facilities, right, he is able to get that Sashti, same opulence as Lord Shri Krishna. So again, this is, so everyone is just thinking of Sayujya Mukti, but all other four are also there. They forget that, right? They're only looking at what is perceived. That's why senses are imperfect. But Devashi Narad reveals this to Yudhishthir Maharaj. जब युधिष्ठिर महाराज देवशी नारद से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ कि शिशुपाल, जो कि भगवान कृष्ण से इतना शत्रु भाव रखता था, इतना वैर रखता था, इतना एनिमोसिटी रखता था, he was constantly criticizing Lord Krishna, और हमेशा उनको different bad names से कॉल करता था, even his soul merged into Lord Krishna. But that merging is for him not just Sayujya but also Sashti, Samipya, Sarupya. So again, all these all these aspects are also there. So again, we have to look at the whole picture. So जो मायावादी होते हैं वो केवल ये सायुज्य के ऊपर रेफर करते हैं, but again there is more happening behind the scene that is revealed by the acharyas, and Devashi Narad is a bona fide spiritual master. He receives knowledge directly from Lord Brahma. So again, he can reveal it. So he's revealing this. So the green bird example जो श्रीला प्रभुपाद ने आचार्यस ने दिया है वो बहुत ही प्यारा है. हम समझ सकते हैं that we still stay in our identity, but when we go to the spiritual world, the spiritual kingdom, then by the mercy of Mother Yogmaya, Radharani, we get spiritual bodies, right? Just like in this example where Shishupal, after his soul enters, he again takes his position as the gatekeeper Jai. So this is where we understand. And another, Srila Prabhupada another example देते हैं. For instance, a green bird, okay, green bird का example हो गया. Second example, impersonalists generally give the example of a river flowing into the ocean and merging.
This may be a source of happiness for the impersonalist, but not the personalist keeps this personal. But the personalist keeps his personal individuality like an aquatic in the ocean. So we just अभी हमने discuss किया था पहले. We find so many living entities within the ocean. If we go deep, surface acquaintance with the ocean is not sufficient. One must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depths. So again, that is very important कि हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो spiritual abode में किस तरह से all living entities are constantly serving Lord Shri Krishna, right? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि. Lord Brahma in Brahma Samhita is praying, okay, Lord, your abode is made up of chintamani, right? The desire fulfilling stones, touchstones, right? Parasmani is that which when you touch it with iron, then it turns into gold. But chintamani means it can deliver all your desires. That is what is this whole abode, the spiritual abode is made up of. And Kalpa Vriksha, the desire trees are, Kalpataru are everywhere. And at that place, every step is a dance and every word is a song. And Lakshmi Sahastra Shata Sambramya Sevamanam. And hundreds of thousands. Sahastra means thousand, Shat means hundred, right? Hundreds of thousands of Lakshmis. Sahastra Sambramya Sevyamanam. They are with love, with devotion, with gratitude to please Lord Shri Krishna. They are engaged in serving Him. And what is Lord Krishna saying? Surabhi Palayantam. So He is serving Surabhi cow. So Surabhi cows, they are not general cows of this planet, but again, they can give so much milk that there can be ocean of milk. So again, they are also very much loved by the Lord. So He is Surabhi Palayantam. उनका नाम एक गोपाल भी है, गोविंद भी है. Govind also means one who gives pleasure to the senses and one who gives pleasure to the cows. And Gopal is one who takes care of the cows. And Lord Brahma is singing, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda, Lord Govinda, one who gives pleasure to the senses, pleasure to the cows. You know, here you are the original person, Adi Purusham, you are Puratan. Right? And I offer my obeisances unto you. Can you announce which place are we in the paragraph? So now we are coming to the third paragraph of chapter 18, verse 55 of Bhagavad Gita. Shrimad Bhagavad Gita के 18 अध्याय में 55 verse number 55 पे हैं हम लोग third verse paragraph पे. Because of his pure devotional service, a devotee can understand the transcendental qualities and the opulences of the Supreme Lord in truth, tattvataha. As it is stated in the 11th chapter, only by devotional service can one understand. The same is confirmed here. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into His kingdom. So how can we qualify to enter into the kingdom of God? By taking to devotional service in Krishna consciousness, right? So that is very important. And now in the next paragraph, बता रहे हैं, after attainment of the Brahma Bhuta stage of freedom from material conception, devotional service begins by one's hearing about the Lord. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahma Bhuta stage develops and material contamination, greediness and lust for sense enjoyment disappears. As lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord, and by such attachment he becomes free from material contamination. In that state of life, he can understand the Supreme Lord. This is the statement of Shrimad Bhagavatam also. So again, यहाँ पे Srila Prabhupada is revealing that when we engage in devotional service, and to engage in devotional service, we have to pray, we have to beg for that seva, because it's a privilege. And the prayer is very simple.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And even a 5-year-old child, a small child, can also chant the holy name. Such simple it is that we can ask. And what is the meaning of Hare Krishna Mahamantra? Please, if you know, put it in the comments. This is transcendental sound vibration, not of this material world. And we are praying to the Lord through this transcendental sound vibration that my dear Lord Krishna, mere Prabhu, Bhagwan Krishna, my dear Mother Radha, Mother Hare. Hara is Radha Rani's name, and just like when we call someone with love, it changes a bit, provocative हो जाता है. तो जैसे सीता को सीते, right? Right? इस तरह से राधा रानी जो हरा की तरह से उनको कॉल करने में with love, it becomes Hare. And Lord Ram, the one who is the supreme enjoyer and who gives supreme bliss, please engage me in your service. So we are begging for service. So that is the mood in humility, in tolerance. We are asking, right? We are begging. So we want to do this so that we please Lord Shri Krishna, and so by pleasing Lord Shri Krishna, all our senses will be satisfied. Rather, our spiritual life will, become glorious. So again, we will develop the spiritual, the transcendental consciousness, the spiritual consciousness, and so we can enter the Supreme Lord. And when we are in the spiritual world, then of course all this lust, anger, greed, which are the material qualities, kam, krodh, lobh, moh, mad, matsara, lust, anger, greed, pride, envy, delusion, all these are anarthas, they are unwanted things, right? They have no value in spiritual life. So we immediately, give them up. And it's automatically done, because when we engage in devotional service, things automatically drop off, the bad things automatically drop off. Just like when you take bath, all the dirt and all the mal, it kind of like washes off your body. Similarly, it disappears. And as lust and desire disappear from the heart of a devotee. So again, desire, this is material desires, because we all have spiritual desire at that point. So the material desires to enjoy and be attached to the fruits, to be the lord of this material nature, those material desires, they immediately vanish. And we can, be engaged more and more in devotional service. So as lust and desire disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord. And by such attachment, he becomes free from material contamination. In that state of life, he can understand the Supreme Lord. So we have to be in pure devotional service with, in Krishna consciousness to understand God. Yavan ya chashmi tattvataha, in truth. So this is also confirmed in Srimad Bhagavatam. People ask, what's the difference between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? इनमें क्या difference है? In Bhagavad Gita, भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या करो, what to do, right? What should be our actions? How should we be thinking? What is it that we need to follow? In Srimad Bhagavatam, he is showing, and his devotees are showing how to do, right? So what is one aspect, but then to be able to do this what, to be able to attain this what, we have to understand how. And those examples are given in Srimad Bhagavatam. And when we hear about devotees like Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, even Gajendra, what to talk about human life, even in animal life, one can understand. When Bharat Maharaj, he gets the body of a deer, he remembers his previous life. This is portion of Bhagwan, हमारा किस तरह से ख्याल रखते हैं, is revealing it, that even in animal life, one is able to serve. Vritrasura, a great devotee of the Lord, born as an asura, rise as demon. Why is he called asura? Because he is taken as an enemy of Indra, because he has driven out all the demigods out of their heavenly kingdom, and he has taken over. So that's why there are suras and asuras. But Vritrasura is a great devotee of Lord. He is Chitraketu, King Chitraketu in his previous life, who was cursed by Parvati. But he was so surrendered soul that he accepted. He said, my mother, I accept your curse as a blessing and I will follow. And he was at Gandharva planet, he had become the ruler. But then he gave it all up and he was born as Vritrasura. And he fought with Lord Indra, and he finally went into meditation, samadhi. And so he attained the supreme abode.
tattvata, because he understood the Lord in truth. So there are amazing, amazing examples in Srimad Bhagavatam. They teach us how to do it. So what is the process, right? What is this process of liberation? Srila Prabhupada purport में आगे बता रहे हैं, after liberation, the process of bhakti or transcendental service continues, right? So it's not that we become spiritual and now we have become God. No, that is the wrong conception. वो तो offense है, बहुत बड़ा अपराध है. Rather, we should understand that we are Jivera Surpure Krishna Nityadas. We are eternal servant. How can the servant become master? But yes, when we serve Lord Krishna with so many devotees, when they serve Lord Krishna with so much love, that Lord Krishna wants to serve. We see, even Balaram, he's lying on the pasture ground surrounded by the Gopa boys, and Lord Krishna जो है उनके पाँव दबा रहे हैं. Now, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, right? वो भगवान है. And Lord Balaram is the Supreme Personality of Servitor Godhead. He is showing us how to serve Lord Shri Krishna. So when Lord Krishna wants to show his service attitude, then he expands as Lord Balaram. When he wants to enjoy, then he expands as Radharani. So हम बलराम जी जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी रिफर किया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड, व्हेन लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. तो हम इस तरह से समझते हैं कि जो बलराम हैं वो हम किस तरह से सर्व कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा. वो राधा रानी के ही एक्सपेंड्स एज हर younger sister, Ananga Manjari. Right? Ananga Manjari means younger sister, younger girls. And also he takes the form of all the paraphernalia. Right? And then there are so many other personalities. We hear about Sudama, who was the friend of Lord Shri Krishna, ready to serve. There was also a Sudama garland maker who received blessings of Lord Shri Krishna when he offered them nice asan when they visited him and nice garlands. So भगवान कृष्ण जब मथुरा में एंटर करे थे तो वहाँ पे एक सुदामा गार्लैंड मेकर भी था. और प्रहलाद महाराज हैं, गजेंद्र हैं, so many personalities, even Parikshit Maharaj, Shukdev Goswami himself, he was the pet parrot of Radharani and he was the messenger, the message carrier between Lord Krishna and Radharani in Vrindavan. So we want to enter into that kingdom of God. So we should enter with the right mood, and that has been revealed here. कि किस तरह से we have to engage in the 9 process of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. Shravanam, hearing, the most potent, most important one. And then Kirtanam, chanting, glorifying. We are doing Kirtan here. We also do Kirtan when we chant the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So one disciple of Srila Prabhupada, expressed to Srila Prabhupada that, Srila Prabhupada, when I am chanting, my mind is thinking of the various pastimes, like how Lord Krishna was in Vrindavan, how he was in Mathura and Dwarka. I was remembering his pastime. It's an offense, right? I should not be doing that. Srila Prabhupada said, no, that is actually favorable. If you are thinking of Lord Krishna's pastimes, name, form, activities, then it is glorious. That is Krishna consciousness. So yes, Smarana, we should constantly be meditating on Lord's name, form, activities, pastimes. And then Lakshmi ji, she is constantly serving Lord's lotus feet. So yes, we have to serve Pada Sevanam. Archanam, doing the deity worship, is also very important. Vandanam, right, singing prayers. So again, Mahamantra is also a prayer. When we read Bhagavad Gita, we are worshipping him by intelligence. When we are doing Mahamantra chanting, then it is also Vandanam, praying to the Lordship. And Dasyam, being a servant to the Lordship. Again, that is our position, that we are eternal servants. So we should serve in the mood of humility, with tolerance, with patience, with love, with devotion, with gratitude for having received such a great privilege. And Sakya, in a friendly mood, just like Arjun was friend of Lord Shri Krishna. So Lord Krishna became his charioteer. Charioteer is a lower position where the person gets kicked in the back when the warrior wants. One has to take care of the horses, the chariot, and the warrior. Takes care of the warrior also. So that is a serving position. Lord Krishna is eager to take that serving position for his loving devotees. Just like a father picks up his son and puts them on their shoulder. That doesn't mean now the son has become father of his father. No. That is the love
the reflection of love of Father. So Lord Krishna, he loves his devotees. He loves his devotees so much that he agrees to be bound by Yashoda Mai. That's why he's glorified as Damodar, the one who is bound by the love, not the ropes, but the love of Yashoda Mai, who is caught by Yashoda Mai from behind, who ran after. Come on, yogis cannot catch him, but Yashoda Mai, she is able to catch because of the love. So Lord agrees to be caught. So in similar ways, we see there's so many pastimes where Lord is ready to serve Nanda Baba, picking up his slippers on his head when he's bringing them to Nanda Baba. So again, today is Akshaya Tritiya, Akshaya Tithi, very auspicious day, and this is a very great day. Even little bit of devotion service performed can have magnanimous, amazing results. So even minute can be magnanimous, then why not be magnanimous? Be constantly engage in devotional service. Dedicate our day fully in engaging in devotional service. What would that be? Can you imagine? So that should be the attitude. That's the attitude of a devotee constantly. So after liberation, the process of bhakti, Atma Nivedanam, surrendering everything in service of Lord Shri Krishna. So again, that is also very important. And Bali Maharaj is glorified as Atma Nivedanam. He surrendered everything, even his very body, not just what belonged to him, Mameti, but also Aham, himself surrendered. So after liberation, the process of bhakti or translated service continues. The Vedanta Sutra 4.1.12 confirms this. Aprayanat tatrapi dashtam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. In Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of the living entity in its own identity, his own constitutional position. The constitutional position is already explained. Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to serve. After liberation, this service is never stopped. Actual liberation is getting free from misconceptions of life, getting free from this wrong understanding, the misconception that I am this body. No, I am not this body. Jivera Surpoya Krishna Nityadas. I am the spiritual spark, part and parcel of Krishna. So this part and parcel is also very important to understand. So Lord Krishna, from his, there are various expansions, right? So there is Somshas, so they are Vishnu Tattvas, they are his own expansions, like Lord Ramchandra, Narasimhadev, Varahadev, and the Purushavtas, Garbhodakshay Vishnu, Shirodakshay Vishnu, and so forth. And then there are Vibhinnamshas. So that's Vibhinnamshas are we living entities who are one of his marginal potencies, energies. So there are three kinds of energies: internal potency, Antarang Shakti, represented by Radharani; Bahiranga Shakti, the external potency, is Mahamaya, represented by Durga Devi; and then we living entities, Jivas, living entities, are the Tatashta Shakti, between the two. So we take shelter either of Yogamaya or Mahamaya. So when we take shelter of Mahamaya, we become contaminated. We get the misconception of this life. We take that as reality. So Maya, here Andhakara. So we are in darkness. But when we take shelter of Radharani, when we take shelter of Yogamaya, when we engage in devotional service, when we are in Krishna consciousness, then we are, in that spiritual platform under the shelter of Lord Shri Krishna and Yogamaya, where we get spiritual bodies. So yes, we living entities are a spiritual spark, right? So we are part. So we understand. Now parcel is we have all the abilities to be an individual. So again, we are not fully independent. We have minute independence because Lord is unlimited. We are limited. तो ऐसे में we understand this. And Srila Prabhupada ने बहुत सारे example दिए. Just like there's a gold mine, right? जो gold mine होती है, that is vast. And a gold ring is just limited. So similarly, we living entities are limited while Lord Krishna is unlimited. Hare Krishna. So again, आज जो अक्षय तिथि है उसमें एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है that I would like to cover. So अक्षय जब हम लोग सुनते हैं inexhaustible, तो उसके बारे में एक तो इंसिडेंट याद आता है कि the sun gods, विवस्वान, उन्होंने द्रौपदी को गिफ्ट किया था अक्षय पात्र, राइट?
and this Akshay Patra would feed as many people until Draupadi she eats, right? So it will, after that it will not, and then when the next time comes for feeding, it will again supply unlimited food. So that is inexhaustible, meaning Akshay Patra is referred. And similarly, it is also said that जो मध्वाचार्य जी थे, शिला मध्वाचार्य, उनको अक्षय पात्र मिला था, एंड दिस अक्षय पात्र वाज वर्शिप्ड, एंड द प्रसाद जो है अक्षय पात्र से जो आया इज लेविशली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिवोटीज. देयर इज ऑल्सो अनदर नंदग्राम के एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा जो अपना चाइल्डहुड जब एंजॉय कर रहे थे पास टाइम्स नंद महाराज और यशोदा माई के केयर में, तो नंद महाराज ने अपना जो रेसिडेंस था नंदग्राम में इस्टेब्लिश कर दिया था, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लेक एक्सकेवेट कराया था. सो दैट्स मैन मेड लेक, यू कैन से यस, और उसका नाम था नंद सरोवर. सो नंद महाराज उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे और जो सारे व्रजवासी थे, वो इस नंद सरोवर में जाके डेली बाथ लेते थे. दे यूज्ड टू टेक बाथ इन दिस लेक. और ऐसे कहा जाता है कि जब नंद महाराज और उनके फैमिली मेम्बर्स एक तरफ बाथ लेते थे, तो अपोजिट साइड ऑफ द लेक पे वृषभानु महाराज, कीर्तिदा सुंदरी और उनकी पुत्री राधा रानी और उनके जो सखास हैं, सखीज हैं, उनके साथ सब आते थे और फैमिलीज के साथ आते थे ऑन द अदर एंड दे वुड टेक बाथ. तो देयर वाज अ लोकल ट्रेडिशन जहाँ पे क्या होता था कि भगवान कृष्ण अंडर वाटर स्विम करते हुए जाते थे, एंड राधा रानी अंडर वाटर स्विम करते हुए जाते थे, एंड दे यूज्ड टू हैव देयर वंडरफुल पास टाइम्स अंडर वाटर. तो इन द मिडिल ऑफ लेक, और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पास टाइम्स दोनों लीलाएं करते थे. और एक बार क्या हुआ, वन डे समथिंग, भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग देखी. नॉर्मली यशोदा माई यूज्ड टू कुक वेरी सात्विक फूड, राइट, विच इज लाइक चावल, दाल, सब्जी, चपाती, इस तरह की चीजें करते थे. बट ऑन दिस डे ही सॉ दैट मदर इज कुकिंग फ्राइड स्टफ, राइट, पूरीज and fried bhajiye, pakode, and all those kind of varieties. So he was surprised that normally you prepare sattvic food, dal, chawal, sabji, roti, but why is this that आप ये इतना fried food cook कर रहे हो, पकवान cook कर रहे हो. तो यशोदा माई इनको रिवील करती हैं कि एक्चुअली नंद बाबा जो है ना, वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं. तो ऐसे में अगर वो उनको ये फ्राइड फूड, कुक फूड देंगी, तो दिस कैन लास्ट मैनी डेज, राइट, क्योंकि दाल चावल रोटी और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से डिजनरेट होती हैं, तो ये ख़राब हो सकती हैं अगर ट्रैवल पे रहेंगे तो ऐसे में ही वॉज वेरी क्यूरियस. ओके, तो कहाँ जा रहे हैं, ही आस्क्ड, लॉर्ड कृष्ण आस्क्ड यशोदा माई, मैया बाबा कहाँ जा रहे हैं. तो यशोदा माई कहती हैं कि अरे वो प्रयाग जाना चाहते हैं. तो भगवान कृष्ण नंद महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप प्रयाग क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ ऐसा क्या है जो आप प्रयाग जाना चाहते हैं. बिकॉज ही इज इन नंदग्राम वेयर लॉर्ड कृष्ण इज देयर, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंड देन समबडी वांट्स टू गो ऑन पिलग्रिमेज. तो ऐसा भी होता है. तो ऐसे में नंद बाबा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अरे प्रयाग इज लाइक द किंग ऑफ द pilgrimages, not knowing that he is sitting at a place which is the topmost pilgrimage where Lord Krishna is present. तो नंद बाबा बोलते हैं कि मैं प्रयाग इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे 3 जो रिवर हैं, राइट, प्रयाग में संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का. गंगा आती है नॉर्थ से, वेस्ट से यमुना आ रही है, और उसके बाद में अंडर वेस्ट से एक्चुअली वो ये आ रही हैं सरस्वती, और ये तीनों मर्ज करती हैं. अंडर नीचे से सरस्वती आती हैं, गंगा यमुना, इसका जो मिलन होता है संगम पे. तो इट इज़ मोस्ट ऑस्पिशियस कि वहाँ पे जब प्रयाग पे जब बात लेते हैं, तो ठीक है, अक्षय तृतीया का दिन आता है नेक्स्ट डे, तो नंद बाबा उस दिन जाने वाले हैं, उस दिन अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं. कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो अक्षय तृतीया पे शुरू करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अनलिमिटेड रिटर्न्स हैं, एंड ऑल सक्सेस इज गारंटीड. ये भी नहीं है कि कुछ त्रुटि हो जाए, दैट ऑल मिस्टेक्स आर फॉरगिवन. दैट्स अनदर क्वालिटी ऑफ दिस डे. तो it is, the success is guaranteed. How can you be like, what is the most auspicious time than that? Because even if we may have some faults, Lord forgives them and he accepts the service that we are doing. तो ऐसे में
जब वो अक्षय तृतीया में अपने सुबह जिस दिन जाने वाले हैं, वो जाते हैं अपनी जर्नी से पहले बात लेने के लिए अपने जो नंद सरोवर है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक वेरी एफल्जेंट, वेरी great personality is rolling into the dust at the, on the land, and then he is entering the lake and he's rejoicing, he's singing, he's dancing, and then he comes out again, he rolls in the dust, and then he goes back. So Nanda Maharaj, this such a kingly personality is doing this. तो नंद महाराज ने उनको कभी देखा नहीं था। बोलते हैं आप हैं कौन, मैंने आपको आज से पहले कभी देखा नहीं है। तो अब नंद महाराज है ना, तो वो बहुत एजेड दिखते हैं, राइट, ही इज़ वेरी एजेड लुकिंग पर्सन। तो जो किंगली पर्सन होते हैं वो बोलते हैं अरे बाबा मैं प्रयाग हूँ। तो प्रयाग, नंद महाराज बोलते हैं मैं तो ऐसे किसी पर्सन को नंदग्राम में जानता नहीं हूँ जिसका नाम प्रयाग है। तो वो जो किंगली पर्सन जो राजऋषि वेश में जो है, जो जमीन में लौट रहे हैं, और वो बोलते हैं अरे मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं प्रयागराज हूँ, किंग ऑफ ऑल होली प्लेसेस, राइट, मैं सारे तीर्थों का तीर्थराज हूँ, प्रयाग हूँ मैं, तो आई एम दैट होली प्लेस। तो नंद बाबा बोलते हैं अरे अगर आप प्रयागराज हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई यू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, और आज के दिन आप यहाँ क्यों आए। तो प्रयागराज बोलते हैं कि अरे बाबा सारे साल भर में जगह जगह से लोग आते हैं प्रयाग पे, तीर्थ स्थान पे, तीर्थराज पे, और वहाँ पे अपने सिंस धो के, गंगा जमुना सरस्वती के जो मिलन पे, संगम के, वहाँ पे अपना सारे सिंस धो के चले जाते हैं। तो क्या होता है, मैं हर अक्षय तृतीया पे यहाँ आता हूँ, ब्रज भूमि में, नंदग्राम में, नंद सरोवर में मैं ब्रज भूमि पे लौटता हूँ, तो मेरे सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। मैं इस सरोवर में जब अपना उसमें बात लेता हूँ, मेरे सारे जो उनके जो पाप उन्होंने मेरे में डंप किए हैं प्रयागराज पे, वो सारे के सारे धुल जाते हैं। तो मैं अपने आप को, जो उनके जो पापों का जो है भार जो मेरे ऊपर है, उनसे अपने आप को धो लेता हूँ इस सरोवर में स्थान लेके, इस ब्रज भूमि में, इस नंदग्राम में लौट के। तो ये सुन के नंद बाबा अचंभित हैं। फिर उन्होंने क्या देखा, जिस साइड पे वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी अपनी बेटी राधा रानी और अनंगा मंजरी और बाकी अपने गणों के साथ आते थे, वहाँ पे क्वीनली रानी जैसे रूप में बहुत सारी लेडीज हैं, एंड दे आर टेकिंग बाथ। सो ही इज सरप्राइज, सो ही आस्क्ड देम, हु आर यू, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। आज से पहले मैंने आप लोगों को कहीं नहीं देखा, आप लोग कौन हैं। तो एक बोलती है, वन लेडी, शी लाइक इन ए क्वीनली स्टेट, शी सेज मैं गंगा हूँ बाबा। और दूसरी बोलती है अरे बाबा मैं सरस्वती हूँ। तीसरी बोलती है अरे बाबा मैं गोदावरी हूँ। बाबा मैं कुरुंजंगला हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं ब्रह्मपुत्रा हूँ, मैं महानंद हूँ। और इस तरह से वो सारे नदियों के नाम ले रही हैं। सो नंदा बोलती हैं आज के दिन आप यहाँ क्यों आई हैं, मैंने तो आपको आज से पहले कभी देखा नहीं। तो सब लेडीज यूनिसन में एक साथ बोलती हैं, समझाती हैं कि अरे साल भर जगह जगह से लोग आते हैं हमारे नदियों में, हमें स्नान लेके अपने सारे सिन छोड़ जाते हैं, तो इससे हम बहुत दूषित हो जाते हैं, बहुत ही सारा पाप होता है। तो हम ऐसे में आज के दिन अक्षय तृतीया पे यहाँ पे आते हैं, ब्रजभूमि पे, नंदग्राम में, हम जमीन पे इसकी डस्ट को जब अपने ऊपर लगाते हैं, इसका जब लेप लेते हैं, और हम जब इस सरोवर, नंद सरोवर में जब स्नान करते हैं, तो ये सारे जो पाप है हमारे से मिट जाते हैं। बिकॉज दिस भूमि इज सो प्योर, because Lord Krishna is there, right? So they revealed to him that this place is so pure, इतना पावन है ये सरोवर, इतनी पावन है ये भूमि, that हमारे सारे sins साफ हो जाते हैं। Everything just goes away. Just like in the presence of sun, there cannot be any darkness, right? The darkness is completely destroyed. It's actually engulfed by the sun, right? So similarly, all this, the सरोवर और ये जो भूमि है, इसका जो dust है, रज है, इसको हम लेप लगा के इस सरोवर के पानी में स्नान करके, all these sins are completely destroyed. तो after taking bath, नंद बाबा ही returns back home, अपने जो हिल के ऊपर है
अपने महल में वापस आते हैं अपने रेसिडेंस पे, और उस समय भगवान कृष्ण है वो अभी अभी सुबह उठे हैं, राइट, अभी उनकी नींद जागी है, और अपने बाबा के सामने आते हैं, नंद बाबा के पास, और बोलते हैं बाबा आप अभी जा रहे हो क्या? तो नंद बाबा बोलते हैं ना लल्ला, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो कृष्णा बोलते हैं आप क्यों नहीं जाओगे, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई आज के दिन तो आपका जाने का था। तो नंद बाबा बोलते हैं हाँ मैं जाना तो चाहता था कि मैं जाऊंगा प्रयाग और नदियों में जो गंगा जमुना सरस्वती है इनमें बात लूंगा, लेकिन आज तो मेरे को पता लगा है कि वो हमारे नंद सरोवर में आके बात लेते हैं, सो व्हाई शुड आई गो देयर, राइट? तो मैं उनको इतना ट्रबल क्यों लूं कि मैं वहां जाऊं जो कि यहाँ पे आके बात ले रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी इन टेकिंग बात इन नंद सरोवर, आई एम वेरी हैप्पी इन ब्रजभूमि। तो ऐसे में नंद सरोवर का नाम जो है वो ऑल्सो बन जाता है पावन सरोवर। सो नंद सरोवर का दूसरा नाम बन गया पावन सरोवर, क्योंकि सारे तीर्थ स्थान, सारी जो नदियां हैं वो अपने में जो डंप किया हुआ सारा जो सिन है उसको प्यूरिफाई करने के लिए वो व्रज भूमि की शरण लेती हैं, उस चरण व्रज को सर पे लगाती हैं, और नंद सरोवर जो कि पावन सरोवर के नाम से विख्यात है उसमें बात लेके अपने आप को प्यूरिफाई करती हैं। सो these are some of the amazing glories of अक्षय तृतीया। तो ऐसे में we can attain, right, this कली एज। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी रिवील करते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। दिस कलेर दोष निधे राजन, so he is talking to Parikshit Maharaj, king Maharaj Parikshit. This Kali age is Doshanidhe, ocean of faults. Astiha Eka Mahangana, but it has one great quality. Kirtanadeva Krishna, just by chanting of the holy name, just by glorifying the Lord, his name form activities pastime. Mukta Sangha, one can become free from this material contamination, Param Rajet, and attain the supreme abode. So, by engaging in devotional service, by chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, we can attain the qualification. So how to qualify to enter the kingdom of God? By taking to devotional service, which simply starts with the chanting of the holy name. और इस तरह से by following the examples, we can make our life glorious, we can make our life sublime, and understand that we are eternal servant. So we always do it in a mood of humility and tolerance. Hare Krishna. Thank you for joining us today. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अक्षय तृतीया की जय। हरे कृष्णा।